I think we are live. Let me just quickly see if YouTube is also showing me as live. I think content of this meeting is being sent to YouTube. Yeah, that's a message. So the title I kept is uh, "चल क्या रहा है?" Right? क्या चल रहा है? I think yes, I can see. Yeah, I can see it here. So ठीक है अभी I mean डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है चल क्या रहा है. I think different ways of putting it. I was on some kind of travel and therefore we couldn't do the YouTube last week. Also हम लोगों का सब्सक्राइबर ओनली जूम मीटिंग भी नहीं हो पाया because I was traveling Saturday to Saturday, right? Was not in the country also for a brief period and therefore couldn't catch up. Market rewarded while I was away with a lot of kind of corrective action, which of course will absolutely add a lot of panic in your minds. And the day I came back on the weekend, I was checking कि सारे emails and सारे messages response आप लोगों के पास हैं. Then of course it was done by the team. फिर आई मेड श्योर दैट जितने भी पर्सनल मैसेजेस मुझे आए हैं जितने भी ईमेल्स मुझे आए हैं मैंने सबको रिस्पॉन्ड किया संडे को. मंडे एंड ट्यूसडे टुडे वी डिसाइडेड टू ओपन अप आवर direct line for you to speak to us 11 to 12, 4 to 5 and call us. So I think I have spoken to nearly 52 members. Right? I was counting 50 लोगों से बात हुई. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस. सबसे अच्छी बात है गुड न्यूज़ है. यू ऑल आई मीन आई थॉट कि पैनिक है पैनिक नहीं है लेकिन दिस इज गुड थिंग. आप जितने भी मेरे मेरे पास 50 कॉन्वर्सेशन हुई. 50 कॉन्वर्सेशन इज अ गुड सैम्पल साइज आउट ऑफ कोर्स छोटा ही है लेकिन जितने लोगों ने मैसेज को पढ़ा हमारे ब्रॉडकास्ट को वर्सेस द पीपल हु कॉल्ड अप. आई थिंक कॉन्वर्सेशन आर वेरी वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ पीपल हैड देवर टू सिनेरियोज. सो मुझे काफ़ी मैसेज आए कि आप बता दीजिए कि क्या क्या डिस्कस हुआ. वन टू वन क्वेरीज क्या हैं. किस तरीके के ड्रॉ डाउन इन लोगों के पोर्टफोलियोज में सो दैट यू मे आंसर देम ऑन अ ब्रॉड बेसिस बिफोर यू पिक दी द ब्रॉड. मैं भी उधर देख के हंस रहा हूँ साहिल का इमोटिकॉन ऑन द चैट. बिफोर वी काइंड ऑफ गो इनटू डीप क्वेश्चंस कि ठीक है क्या चल रहा है कौन से इंडेक्स में मूवमेंट है कहाँ पे हमारे स्मॉल केस कहाँ पोजिशन हैं. वो सब करेंगे अभी आधा आधा घंटा आराम से बात करेंगे. right? आधा जितना टाइम लगेगा विल आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस. So, coming back to ब्रॉड क्या पैटर्न रहा क्वेश्चंस का. आई थिंक दो तीन तरीके क्वेश्चंस है. एक है कि पीपल आर सिटिंग एट नियरली 6%, 4%, 10% तक ड्रॉ डाउन्स राइट उनके पोर्टफोलियोज में विच इज़ फॉर रियल. A lot of people are of course sitting at a lot of good profits, but of course they have come down from peak to 6%, 5% drawdown. वो मैं एक पहला लेयर बोलता हूँ. राइट मैं बोलता हूँ कि तीन मैंने जो कॉमन आंसर्स दिए वो ये थे कि only there are three times you should add more money, right? One, when there's a rebalance हुआ नया कुछ फ्रेश रिसर्च आई आपने उसमें पैसा ऐड किया दैट्स परफेक्ट राइट. दैट्स द वन यूज केस. अभी तो कोई रीबैलेंस इमीडिएट है नहीं ना ही इमीडिएट रीबैलेंस आई एम एंटिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू सी रिकवरी इन द मार्केट राइट. जो है ठीक है. आई आंसर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अराउंड exposure to gold and exposure to cash. Is it right now advisable or not? That's one. सेकंड तो वो वाला आंसर किया गया कि रीबैलेंस के बाद वी शुड ऐड मोर कैपिटल. अभी दैट इज नॉट द यूज केस हेयर. सेकंड यूज केस है सब्सटेंशियल काइंड ऑफ सम ड्रॉ डाउन राइट. आप लोग 1%, 2%, आप ऑलरेडी 15% ऊपर हो फिर आपका अभी 6% दिखा रहा है 7% दिखा रहा है 7-8% का आपका वाइप ऑफ हुआ नोशनल प्रॉफिट्स. You want to kind of you are adding 15,000, 20,000, 30,000 at every fall कि अब तो लास्ट अब तो लास्ट ऐसे नहीं होता राइट. इट शुड नॉट हैपन. यू नेवर नो वेयर इज द बॉटम. वी कीप सेइंग डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ बट देन आई मेक सम थ्रेशोल्ड्स कि ठीक है आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा 6-7-8% डाउन है जैसे कि अभी सिचुएशन है अभी अच्छा टाइम है राइट. यू कैन स्टार्ट एडिंग कैपिटल. रिकमेंडेशन नहीं है अपफ्रंट बट दिस हाउ आई स्ट्रेटेजाइज बिकॉज जो कंपनीज में पैसा लगा हुआ है दे आर गुड कंपनीज विद गुड फंडामेंटल्स और सस्ती मिल रही हैं 8% सस्ती मिल रही हैं.
पैसे होने चाहिए। एक यूज केस था, तो आई काइंड ऑफ गेव द आंसर्स अराउंड दैट, एंड पीपल वर काइंड ऑफ टुक दैट एज अ गुड आंसर। फिर एक यूज केस है जहाँ पे लोगों पे कैपिटल नहीं है, राइट? People have gone fully in. They do not have more capital to invest in. Even though we were saying 20% रखना चाहिए, और 20% जो लोगों ने रखा था वो आई थिंक शुरू के जो थोड़ा करेक्टिव आया वहाँ पे चला गया। तो बट मुझे लगता है कि वहीं पे मैंने एक बोला कि 5% से नीचे कुछ भी नहीं है। अगर 5% से नीचे भी फॉल नहीं है, 7-8% नीचे फॉल नहीं है, तो क्यों आपको एवरेजिंग आउट करना है, राइट? एक सब्सटेंशियल फॉल हो 10% का जो कि से अभी दिख रहा है अगर आपके बास्केट्स में, देन यू कैन ऑफ कोर्स ऐड कैपिटल। अच्छा, कैपिटल नहीं है तो आई मेट फ्यू पीपल हु recently started in October only, and started with big capital sitting at substantial kind of, I mean substantial मतलब जो भी नंबर मैंने बात किया, from 2% range to 10% range, depending on the basket and the combination of basket, because few people usually do parallel investment, कुछ stock उन्हें अच्छा लगा और उन्हें खुद खरीद लिया, वो खुद 10-15% नीचे है। सजेशन उनके लिए सिर्फ इतना सा है कि आई मीन to be honest, there is no point in you booking losses. I don't see trend reversals, right? I don't see कि पूरा bear phase start हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। Markets are, very well intact। अगर मैं डेटा भी खोलूंगा अभी, I'll of course open the charts and if needed, once the questions are answered। So मैं अगर निफ्टी का ब्रॉड मार्केट देखूं और उसके मंथली मंथली, और लेट मी जस्ट गो टू अ बिगर स्क्रीन, जस्ट लेट्स सेकंड। बाकी मैं सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी लेता हूँ। Then we'll go to the sheet also. So when I am actually checking this structures, right? I mean, structures are, of course, there is a break in the continuous higher highs, higher lows, right? जो कि एक स्ट्रक्चर बनता है, ट्रेंड बनता है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स निफ्टी के important हैं, right? We should get, we are at 24,644, right? I mean, we should be kind of looking at 25,000 level to kind of confirm that we are back in the bull trajectory। उस फेज तक उतने मूव के लिए आई थिंक थोड़ा सा एक स्ट्रगल होता है, बट इतना स्ट्रेच है ऑन अ लोअर फ्रेम कि वो पुल बैक में एनी हाउ यू हैव द पुल बैक पेंडिंग। बिकॉज अगर आप हायर फ्रेम्स देखोगे, वीकली फ्रेम्स देखोगे, देन मार्केट्स हैव काइंड ऑफ कूल ऑफ अ लिटिल। लिटिल क्या, मैं एक बार निफ्टी का ही नंबर आई ऑल्सो शेयर, मे बी लेट मी शेयर हेयर इटसेल्फ, राइट? आई मीन मैं ये स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, जहाँ तक स्मॉल केस की बात है उनको भी रिव्यू कर लेंगे। जहाँ तक बताना अगर आप लोगों को मेरा कुछ स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा हो तो। आई थिंक चार्ट दिख ही रहा होगा। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट, राइट, अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एंड लेट मी जस्ट सी 3 टाइम फ्रेम्स, मे बी हेयर, राइट? सो ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, राइट? दिस इज अ वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा एक कॉमन मूविंग एवरेज आप ले लो, कोई भी 20, 50, राइट, ऑल दैट या एनीथिंग, राइट, फॉर दैट क्या नंबर है यहाँ पे, आई थिंक या 20, 50, 200 ही है। सो मार्केट हैव बीन काइंड ऑफ ट्रेलिंग अलोंग दैट। यहाँ पे फर्स्ट टाइमिंग मोमेंटम काइंड ऑफ थोड़ा सा ठंडा ब्रेक हुआ है, विच इज़ नॉट अ वेरी वेरी very positive sign, because usually, market to kind of continue the momentum, the relative strength index also needs to be in momentum, right, and needs to maintain the momentum above a certain number, I mean, above a certain kind of level, so that you see that there are no trend reversal patterns which appear. I mean, don't we will not try to mix the charts with the fundamentals of the company, but कहीं ना कहीं एक टेक्नो फंडामेंटल व्यू आपको रखना चाहिए। और आप डेली फ्रेम पे भी आप देखोगे, इफ यू सी डेली फ्रेम आल्सो, द लेवल आई मार्क्ड देयर, I think it's a level where which kind of course will now work as a kind of resistance here, but I think this level would be good to kind of observe, right? अगर आप numbers देखो तो ब्रॉड इंडेक्स ने भी इसी इसी मंथ में, तो यहाँ देखी जाएगा, राइट, दिस अक्टूबर मंथ अलोन, 22 days, we are sitting at Nifty -5%, right? Index is 5%, then it is natural that small cases of Gulfi, which are
tilted towards not really large as such, of course, are sitting at 5 to 8%, right? Which is very natural. और यही आप मूवमेंट देखो तो आई मीन दिस इज द मूवमेंट आई वाज रेफरिंग टू अराउंड 7% मूव राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ 26,000 7% का मूव निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव हो गया विद द लास्ट 3 4 वीक्स so last 3 4 weeks have been kind of quite harsh but if you see from a larger scheme of things perspective is it a sign of trend reversal? No, it is not, right? It is simply things reversing to the mean, right? It is a simple mean of 20 day 20 week moving average. I mean, if you even talk that way. And यहाँ पे आप देखोगे तो it's like extended move. थोड़ा छोटे फ्रेम पे आप जाओगे तो you will realize that it is such an extended move that pullbacks will kind of be easily taking a Nifty to 25,000 level, right? Whenever the pullback has to happen. Uh, overall, I think Nifty का ये व्यू है. बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार. I think Bank Nifty has been trying to kind of show some strength, I think last week itself, but then इस वीक फिर से ठंडा शुरुआत हुआ. और बैंक निफ्टी भी देखोगे तो अगेन वी आर नॉट टॉकिंग लेवल्स हियर, वी आर नॉट टॉकिंग हेयर इन टर्म्स ऑफ कि इस पे कोई डायरेक्शनल व्यू, बट पॉइंट बीइंग ये इतने स्ट्रेच्ड मूव्स हैं. अगर आप देखो इफ यू लुक एट दिस usually price will kind of follow a standard of its average. एक मीन को लेते हुए चलता है अपने साथ. प्राइस when gets stretched, right, when it gets stretched from its mean, ऑटोमेटिकली वो 10 15% का स्ट्रेच है तो वो ठंडा ही हो रहा है, राइट? जस्ट गेटिंग ठंडा. अब आजकल मार्केट में ठंडा होना ही 10 15% है अगर बिकॉज ऑफ द वे मार्केट्स आर इन्फ्लेटेड, देन दैट यू हैव टू काइंड ऑफ पास दैट stage of letting the markets go up, but there is no sign of reversal, to be very honest. बाकी अगर आप मिड कैप या मिड कैप इंडेक्स देखते हो या स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हो तो यू विल आल्सो सी दैट स्मॉल कैप इंडेक्स के आज तो बहुत ही खराब हालत है. आज स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय अराउंड 2%, राइट? कल भी अराउंड 1.5%. दिस इज द कॉमन, यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा. सो अगर आप वैसे व्यू देखते हो तो या दिस मंथ अलोन अगेन स्मॉल मिड कैप इज डाउन बाय 6%. दिस वीक अलोन, week is just 2 days, right? 2 days in the week, so it is again by 4%, right, in 2 days. स्मॉल कैप देख लेते हैं. स्मॉल कैप का आप कोई CNX स्मॉल कैप 100 इंडेक्स या 250 ले लेते हैं, मान लीजिए एक ब्रॉडर व्यू के लिए. 250 भी आप देखते हो तो आज स्मॉल कैप इज 3% डाउन, राइट? आज ही की डेट में इंडेक्स इज डाउन 4.5, nearly 5% down in this week alone, like in the last 2 days. और इस मंथ अलोन में ही अक्टूबर मंथ. अब यहाँ पे आप देखो ना, द मूवमेंट हैज बीन सो वन वे दैट देर इज नो zigzag, देर इज नो प्रॉपर हार्ट बीट, राइट? विच इज ऊपर नीचे जो कि इज द राइट वे टू लिव, राइट? कि ऊपर हार्ट बीट ऐसी होनी चाहिए ना, वेव्स होनी चाहिए. वन वे स्ट्रेच मूव है, ऑफकोर्स ठंडा होंगे, ऑफकोर्स इज अ लॉट ऑफ स्टिल अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ करेक्ट. थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक हुआ है. मोमेंटम ब्रेक हुआ है, उससे थोड़ा सा आई मीन इट ऑफ कोर्स टेक्स टाइम्स टू पुल बैक, बट पुल बैक इज नियर, डोंट वरी अबाउट इट. So, I mean, that is what the kind of questions I was getting, and I think that about all I answered, right? Uh, और अब हम थोड़ा क्वेश्चंस लेते हैं एंड देन फिर थोड़ा सा चैट भी पढ़ लेते हैं. मज़ा आएगा. फिर वापस से जाएंगे टू दी शीट्स क्वेश्चंस. लेकिन चैट पढ़ के थोड़ा सा बहुत बुरा चल रहा है. साहिल नैनी हे रॉबिन, क्या हुआ, गला तक पानी आ गया? हाँ, अभी तो आई वाज एट सम वेरी ब्यूटीफुल बीचेस. I was in Andaman Sea, in very few, in the beautiful locations of Andaman Sea, in Krabi and in Fifi Islands. Of course, वहाँ तो you can अच्छा, मेरे सामने सिस्टम पे भी वही पिक्चर आ रही है. So of course, गले तक पानी तो स्नॉर्कलिंग करके आ रहा हूँ मैं. So that way पानी सर के ऊपर था. Rajesh is saying, I just invested in your small case. Nice. Thank you, Rajesh. Amit saying, good afternoon, Robin sir. Thank you, Amit. Good afternoon to you. सर बचा लो महेश. कुछ भी चिंता नहीं करो, मैंने आपको अभी ब्रॉड इंडेक्स पे दिखाए. निफ्टी 50 दिखाया, स्मॉल कैप मिड कैप दिखाया. वी ऑल्सो विल सी क्विकली. सारे फंड्स देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं सारे एक बार. इंडाइसेस देख लेते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है. थोड़ा सा आपको मार्केट का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आएगा कि किधर थोड़ी स्ट्रेंथ है. सो बचाने की कोई ऐसी नीड नहीं है. आई थिंक आप बिल्कुल सेफ हो महेश.
जब जरूरत होगी तो आपको हम लाइफ जैकेट पहना देंगे व्हेन यू एक्चुअली जंप इन द सी। सो जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसके लिए लाइफ जैकेट होती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दिनेश इज सेइंग मेरी भी बहुत मस्त बात हुई सर आपसे, थैंक यू ऐसा प्लेटफॉर्म और मौका देने के लिए। चलो थैंक यू दिनेश, आपने कॉल किया, हमने आपसे बात की, यू आर सेटिस्फाइड विच इज़ अ गुड थिंग। कुलदीप सिंह बोल रहे हैं एक्सलेंट व्यूज, थैंक यू कुलदीप। अमित बोल रहे हैं एक सजेशन इन एनी पोर्टफोलियो इफ एनी स्टॉक इज इन बिग पैनिक एंड अवेलेबल फॉर गुड रिस्क टू रिवॉर्ड देन वी कैन शिफ्ट सम। एक सजेशन इन एनी पोर्टफोलियो इफ एनी स्टॉक इज इन बिग पैनिक एंड अवेलेबल फॉर अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड देन वी कैन शिफ्ट सम। समझा नहीं भाई, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से इफ आई गेट इट राइट कि अगर कोई का स्टॉक बहुत ही गिर गया है और लग रहा है कि ठीक है जस्ट टेम्पररी पैनिक, देन उसमें शायद ही वांट्स टू ऐड मोर मनी। या यू कैन वेरी वेल डू इट, व्हाई नॉट। आई मीन अभी तो रीबैलेंस एब्सोल्युटली वी हैव टू काइंड ऑफ होल्ड राइट, बिकॉज कोई ऐसी नीड नहीं है। जहाँ तक बात हो रही थी, कुछ क्वेश्चन मैंने रिव्यू किए बिफोर कमिंग टू कॉल कि रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड हैं, बट वो जूम ऑनली मीटिंग्स के लिए थे, बट मैं फिर भी एड्रेस कर देता हूँ कि इज इट द राइट टाइम टू से शिफ्ट टू कैश or shift to or kind of come back, out exit at loss. I don't think it is the right level of correction, right, where you have to kick off these strategies which demand you to move to debt instruments from equity asset class। equity asset class में तो ये volatility होगी ना, मतलब आप कैश में नहीं आओगे राइट, इतने ड्रॉडाउन में कैश में तो यहाँ कोई आता है, ड्रॉडाउन हैज टू बी सिग्निफिकेंट, हैज टू बी लॉन्ग लास्टिंग, right, then you kind of shift। So उसके लिए अभी अभी is not the time to kind of think about shifting to cash, right? I think you can very well, of course, if you are out of capital, hard luck, right there, I mean, but अगर if you have capital, it's a very good time to add capital, why not? और अगर नहीं भी कैपिटल है तो कोई बात नहीं, जस्ट रिमेन राइट, जस्ट रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ हैप्पी स्टेट एंड जस्ट डोंट चेक योर पोर्टफोलियो। हाय मेरे पैसे महेश कह रहे हैं उमा शंकर कह रहे हैं सर सिंपैथी नीडेड प्लीज, व्हाट अ बैड लक स्टार्टेड विद द बास्केट एट द एंड ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम देन। नहीं नहीं कोई बात नहीं उमा शंकर जी, आपका नाम ही उमा शंकर है तो आप सोचो कि व्हाट फ्यूचर लाइज, एंजॉइंग 7% बास्केट डाउन, कोई बात नहीं। कश्यप सिंह लाल है पूरा ठेला लाल है, कहाँ गए वो सागर गागर सब जो क्लास मॉनिटर बन रहे सॉरी आई हैव टू रीड ऑल दैट चैट, आई शुड डिलीट ऑल दिस चैट, I will delete all this chat because this is not something which is very good to call out. I will also edit the video. Sorry, in the flow I read. So I don't know, Kashyap be referring to whom and whom, but try to avoid personal conversations on public YouTube channel. आप कुछ जिससे बात करनी है आप उन्हें कॉल करके बात करिए, मुझसे बात करनी है। मेरे पास मंडे और ट्यूसडे कल और आज हमने 2-3 घंटा लगातार बात करी है, जो लोग वेटिंग में थे उन सबको कॉल बैक किया है। वी मेड श्योर दैट एवरी सिंगल कॉल इज अदर आंसर्ड और कॉल्ड बैक। आपका कोई कॉल नहीं आया, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कन्विंस्ड हैं एंड कोई क्वेश्चंस नहीं है। कैन बाय डीप डीप नाउ वी हैव अल्फा मोमेंटम, या आई थिंक मैं बोलता हूँ कि कुछ थ्रेशोल्ड बना लीजिए, 5%, 10%, 15%। आई थिंक ये नंबर स्टैंडर्ड नंबर्स हैं जहाँ पे यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट स्टार्ट एडिंग कैपिटल, व्हाई नॉट। इफ यू आर फॉलोइंग निफ्टी और मार्केट इंडेक्स फिर निफ्टी फिफ्टी का चार्ट क्यों देखना है? नहीं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट नहीं देखना है, आप निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट भी देख सकते हो। मैं आपको ब्रॉड मार्केट दिखा रहा था कि ब्रॉड मार्केट जिसमें 50 टॉप लार्ज कंपनीज है कंट्री की, राइट, जिससे आपका देश चल रहा है, 50 टॉप कंपनीज बाय साइज, अगर उनमें 6% का करेक्शन है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कहाँ कहाँ लिक्विडिटी का इशू आएगा, राइट। डैडी घर से निकाल देंगे अगर इतना लॉस देख के बिल भरने के पैसे अल्फा ब्रांड में लगा दिए थे, महेश जी ने। महेश जी ऐसा ना करो, डैडी आपके भी घर से निकाल देंगे और मुझे भी फ़ोन करके बोलेंगे कि ऐसा मैंने क्या आपको गलत बोला कि आपने कोई बिल विल भरना था और आपके घर की लाइट वाइट कट गई है क्योंकि आपने पैसे वहाँ लगा दिए। ऐसा नहीं करिए, राइट, प्लीज पुट कैपिटल विच यू डू नॉट नीड फॉर कपल ऑफ ईयर्स। इंडेक्स देख के फायदा ही क्या है, इंडेक्स गिरता ही तब अपना अल्फाबेट तो खुल के गिरता है, जब बढ़ता है तब गिरता ही रहता है कश्यप इज सेइंग कुछ भी कर लो, इनका पोर्टफोलियो गिरना ही है तो कुछ फायदा नहीं देखने का। क्या 2008 की मुंडी आएगी जी बिजनेस पर? हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, कुलदीप जी ने कुछ पूछा है कि कुछ तो जी बिजनेस पे आवाज़ आ रही है कि कुछ कुछ 2008 जैसा सीन लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा। आई मीन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट
इंडिया एज अ कंट्री, एंड कुछ भी नहीं है अभी। आई मीन आई नो 7-8% देके किसको अच्छा लगता है, और जब प्रॉफिट्स में हो आप और वो नीचे आ जाता है 10-12%, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड फीलिंग। हम लोगों का पर्सनल पोर्टफोलियो भी डाउन है, राइट। मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग माय मनी, बिकॉज व्हाई नॉट टू पुट मनी व्हेन मार्केट्स आर अवेलेबल फॉर अ चीपर, एंड देयर आर पॉकेट्स ऑफ stocks which are really good and really available at low price now. Uh, Where is low volatility in Golfi small case factors? No, low volatility is only, Pranav, one of the kind of factor use. If you see the exposure to, say, pharma companies, if you see exposure to FMCG companies in Golfi small cases, they are a part of the volatility factor. And वहाँ तो volatility कम ही है. अब consumption as a sector was the worst performing sector, right? If you see the mutual funds in the consumption space, the ETF in the consumption space have been the worst performer the last 1 month. 15% का drawdown है एक एक महीने में, right? उस space में. So absolutely, but if you look at the volatility as a overall basket, Pranav, all small cases of Gulfi are very high volatile. It is a clear indication on the top of that small case. It's a high volatile small case, and of course, it is high volatile. कश्यप का लाल 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 है सब कुछ। निदिश इज हाई लो हाई। जितेन, गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन योर स्मॉल कैप टुडे इफ नॉट, यस यस जितेन, व्हाई नॉट प्लीज। सर कौन से सीक्रेट लोकेशन पे गए थे सर? रिगार्ड्स आनंद। नहीं नहीं सर, आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग फॉर वर्क एंड देन आई वाज एज अ वेकेशन आल्सो। आई वाज इन सम पार्ट्स ऑफ थाईलैंड। आई वाज ट्रैवलिंग टू फीफी आइलैंड्स एंड Krabi and few places like that. या आई चेक द शीट क्वेश्चंस। नितीश, पहली बार तो लाल दिख रहा है, अच्छा है, 3 साल में सस्ते में माल मिल रहा है, ऐड करने का टाइम। नितीश जी सपोर्टिव। किशले इस बोल रहे हैं, आई मीन 50% कैश विल कंटिन्यू टिल इलेक्शन एंड होप निफ्टी क्रैक्स मोर। ही वांट्स निफ्टी टू बी एट 22-23K। गाइस देख लो फिर क्या होगा। सर समुद्र गए थे तो डूब गया, हम हिमालय जाएंगे तो उठ जाएंगे सर। मेरे स्मॉल केस का फी का क्या हुआ, विच आई टॉक यस्टरडे। अमित जी, कुछ तो आपका मैं देखा मेल आ रहा है, राइट? स्मॉल केस टीम को आपने कॉपी किया है, उनसे जवाब भी आपको आया है कि उन्होंने आपकी फीस, जो भी डिस्कशन चल रहा था आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, वो हुआ है। फिर से आई कैन ब्रिंग दैट अप। चैट बंद कर दी सर जी, ग्रुप चैट अपने टेलीग्राम के वीकेंड पे भी नहीं खोल रहे हो आजकल? हाँ, एक्चुअली वीकेंड पे मैंने रियलाइज किया, मैं वीकेंड पे ही आया हूँ ना, तो मैंने वीकेंड पे आई मीन आई रियलाइज की टीम ने ओपन नहीं किया। हम ओपन कर देते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर पैनिक है तो वी कैन कीप इट ओपन ऑल टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि वीकेंड पे आप लोग फिर लाल ग्रीन ठेला करने लग जाओगे। उससे क्या होता है, जो लोग, there are few people who are not on WhatsApp, they are on Telegram. I got lot of calls yesterday from people who somehow was not on WhatsApp group but on Telegram. So I realized that अगर अगर मैं वो ग्रुप फिर ओपन कर दूंगा और आप फिर वहाँ शुरू हो जाओ अपने डिस्कशंस में, विच विल काइंड ऑफ डीरेल जो मोटिवेशन। अभी तो आप तो उससे मोटिवेटेड रहते हो कि जिप्स बेच के, बट देयर आर मेंबर्स राइट हु आर वेरी न्यू, दे नीड मोर गाइडेंस, दे डोंट नीड लॉट ऑफ डिस्करेज, दे नीड एनकरेजमेंट रादर, राइट? उनके लिए बहुत गलत है वो। ये सब करेक्शन चलता रहता है। मैंने ये सब मेरी सुबह एक सज्जन से बात हुई, ऑफ कोर्स वेरी वेरी बिग पोर्टफोलियो, राइट, वेरी लार्ज पोर्टफोलियो, एंड सिटिंग एट गुड ड्रॉ डाउन, एंड ही वाज लाइक, मैंने ही सेड मैंने जीरो भी देखा है। आप 10% की बात करें, मैंने जीरो देखा है अपना पोर्टफोलियो। सो इफ ही इज इन कॉल, ही कैन, आई मीन ऑफ कोर्स ही कैन काइंड ऑफ रीच आउट हियर। Rakesh Jhunwala mentioned that when participation is max and earnings start to disappoint, it eventually turns into bear market. I mean, yeah, that's a fact, right? But bear market has a definition, right? Where bear market turn होने के लिए you need to first face through the entire corrective here, the entire correction here. You need to get into pullback mode. The pullback should fail further, right? And then the bear market, the trend reverse, and then the bear market starts. वो तो बहुत लंबी साइकिल है, वहां तक इतनी साइकिल with such kind of institutional support is difficult at this conjuncture. Class monitor don't not bother about daily price movement. आप बहुत चिल पर्सन हो। नहीं अभी तो chill नहीं, अभी तो there is nothing which we can do. We have exposure to derivatives also, right, in our baskets. I mean some of them. I mean मैंने से basket, हम हमारे अपने पैसे जहाँ लगे हैं। I am not sitting on cash. I am nearly fully invested. मैंने से nearly around 70% invested. जब मेरा खुद का पैसा 70% invested है तो मैं मतलब आप लोगों को सेम चीज़ ही बोल सकता हूँ।
मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके अल्फा मोमेंटम के, और मान लो कि मार्केट यहाँ से 60% करेक्ट होता है, मार्केट में लाइक कोविड आपका सेम स्टॉक के साथ रिकवर हो गया या स्टॉक चेंज? नहीं नहीं प्रेम जी, इतना तक नहीं वेट करेंगे। आई थिंक द आंसर द सेम क्वेश्चन की मार्केट में अगर डीप टाइप करेक्शंस आते हैं, राइट, ट्रेंड रिवर्सल होता है 20-25% का फॉलो होता है, ऑफ कोर्स विल मूव टू सेफर एसेट्स। देवेश इज इन थाईलैंड राइट नाउ, वेरी नाइस देवेश, आई केम बैक ऑन संडे। मसाज कराई थाईलैंड में। व्हाट हैपेंड विद ज्योति लेफ्ट टुडे, इट वेंट अप 5% इन द मॉर्निंग, नाउ डाउन 5%। यही गेम है जीवितेश, मार्केट है। ठीक है, बीच में ये वाले क्वेश्चन में ले लेते हैं ना। अ, बीच में शीट से क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी गाइस, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ा डिसरेस्पेक्ट हो जाता है कि लोगों ने इतनी मेहनत करी है। तो क्वेश्चन आया है 22 की डेट का। Fennel, we have reached a point where the losses are quite significant. Could you please advise on how much we need to top up in order to recover, or share the future plans regarding this in the last two rebalances? Yeah, I think Fennel, हमारा इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ. You called us also, and I answered the exact I think response. Right? Ramya पूछ रहे हैं. I'm a subscriber of Alpha Momentum Fusion. Mail has been sent to your team, but not added to community. ठीक है, वो मैं करा देता हूँ. इज इट द राइट टाइम, जीवन पूछ रहे हैं, टू एवरेज स्टॉक्स अल्फा फ्यूजन? हाँ, अच्छा प्राइस पे मिल रहे हैं, अगर थोड़ा कैपिटल है तो आई थिंक आई वुड पर्सनली से, मतलब रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मतलब वाई नॉट, मैं तो कर ही रहा हूँ एवरेज अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। स्मॉल कैप और कितना डाउन हो सकता है यहाँ से, रमन पूछ रहे हैं। डाउन तो बहुत हो सकता है। शायद बोल रहे हैं बचाओ रॉबिन भाई, जस्ट नीड योर कंपोजर एंड encouragement टू सेल थ्रू दिस। यस, आई थिंक आई माइट बी साइंड, आई मीन आई एम नॉट श्योर if I'm sounding bored or sounding excited or sounding kind of composed, but point is I think ये तो बहुत आराम से आप सेल थ्रू करो। कैपिटल है तो ऑफ कोर्स यू आर एट द लकी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कि यू कैन ऐड मनी। कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से दूर से देखो, हम ना रीबैलेंस अभी कुछ लेके आ रहे हैं, कोई नीड ही नहीं है, आप आराम से रिकवरी मोड में जाओ। सुमन, सभी गिर रहे हैं, यस। कौशिक ने पूछा, लेकिन फॉर जूम के लिए था, बट मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था क्विकली, तो आई स्टिल आंसर अ बिट ऑफ इट, कि देयर इज अ सडन अंडर परफॉर्मेंस इन मोमेंटम अल्फा ब्लेंड एंड अल्फा. He took a name of a small case which is not ours, so I will ignore that point. Shouldn't a selective rotation of gold cash call be taken to protect wealth so that the proactive re-entry can be made? Yes, theoretically yes, but I think the current correction is does not demand you to cut that 10% loss, and I mean, and then move it to liquid, and then again re-enter. I think you are very well placed in the current compositions. If you have capital, you can absolutely add to average it down. There's no need at the moment to kind of think about moving to cash. If you average it down, getting more capital, you even bring that 4, 6, 8% down to say, 2 to 3% more up, which means that it's faster recovery. Jayesh is पूछ रहा है, I'm reaching out to discuss strategies for managing lump sum investment during this market drawdown. I'm particularly interested in understanding how to best allocate my funds and minimize potential losses. I think Abhi, what you can do, Jayesh, is the prime quality. I mean, one of these, say, balance sheet, quality based small case, and one of, I mean, what you can plan is plan two baskets as a combination, right? Balance basket could be one, which is a monthly rebalance, and along with balance basket, innovating growth leaders has been quite promising. If you see last week returns, last 1 month returns, 3 months, 6 months. If you see all of this, I am checking including growth leaders have been quite stable, been quite well placed. So you can think about balanced basket and growth leaders combination somewhere. Uh, Anand is saying, okay, sir, why to enter queries on daily movement of stock price? If you're confident on your picks, no need to make yourself vulnerable. I fail to understand if it is investor lack of confidence or on you or your lack of confidence. और कहाँ गए, पूरा दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाइए. On yourself, don't get me wrong. नहीं नहीं, देखिए आनंद जी, point is it's not about anybody's lack of confidence. It is about how the product is positioned, what kind of audience I cater to. So I have different segment of personas, right? I have, of course, few people who are in the markets from 15 years, 20 years, have invested crores of capital in the small cases.
Nobody's calling me, nobody's even pinging, right? All of that. They have seen the faces, they understand. There are a large part of the persona, a large user base who are first time market participant, who are first time small case users, right? I mean, I feel very excited and very happy and pleased that when people tell me that it is their first small case in life, which makes me very happy, and I think I feel very responsible to kind of talk to them and give them the required. I can't do anything with the market right now, but I can of course talk to them and tell them that whatever they are doing is right. So it's not about individual picks and answering about individual company. Anyhow, we don't. If you look at any of our response, we have never responded on one company as such. Sometimes when people are very particular about when they start sharing us the names and charts, then we kind of to kind of have the conversation, right? But yeah, it's not about the lack of confidence on the picks or on the people. It's about the ecosystem. It's about the intent of it's about the intent of making sure that the people who are coming do not come with the intention of swing trading, do not come with the intention of ठीक है alpha blend weekly rebalance होता है तो हर हफ्ते कुछ करेंगे. They also should slowly understand that if they are in that intent, right, gold fee is not the right choice for them. So I just kind of make sure that I spend right out of my 10 hours, 12 hours a day of my work. I of course want to spend 2 hours in doing that. मिनाल इस पूछ रहे हैं मेरे पास अल्फा ब्लेंड है, मेरे स्टॉक्स 15-16% डाउन है, 16-17 should I invest more in this or wait? Is alpha blend right choice for 3 to 5 year? Yes, you can add more money and it is the right choice. गाइनेश पूछ रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड डिस्कस विद यू. आई डिडंट कॉल और मैसेज द टीम. मेरा पोर्टफोलियो तो बड़ा है तो है ही नहीं. मेरा पोर्टफोलियो बड़ा तो है ही नहीं. अच्छा, इतने लाख का है, इन्होंने अमाउंट दिया है. डू आई रियली नीड टू पैनिक? बस इतना बोल दीजिए. आप बोल देंगे इतना बहुत है होगा मेरे लिए. नहीं, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए आप ज्ञानेश जी, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए. जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड. दिनेश पूछ रहे हैं सर प्लीज elaborately make a video and upload it on YouTube on what is factor investing and please describe different factors with some examples that even a layman can understand so that whenever anyone join Golfi you can suggest them to go through that video so that he can easily understand the basic concept. मैंने बहुत बार ट्राई किया है. I mean we have a video Dinesh which talks about factor investing. हमने ट्राई भी किया है, काफी लोगों को शेयर करते हैं, but लोग भी कम बैक करते हैं कि 1 घंटे का वीडियो कौन समझे, all of that. So हमने उसके लिए अभी as part of our we have a new member in the team. We are now making small snippets of each factor and then start uploading so that उस factor के understanding के लिए we kind of compute the answer so that somebody is trying to buy balance basket, right? What exactly balance basket mean from our perspective. रौनक पूछ रहे हैं आई इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ बिग ही सेड सम अमाउंट ऑन 4 occasions 16, 17, 21, 22 अक्टूबर and currently sitting at some loss percentage of 5%, 4.5. Considering market volatility and global tension, should I add more funds on every 2% daily dip? No, 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 no. Please don't do anything like that, Ronak. I don't think this work like that. We can't time the market. Nobody can. Rebalance a substantial fall of greater than 6-7%, or your real need to add more capital. Only 3 reasons you should add money. स्वप्ना रौनक ही पूछ रहे हैं द मल्टी फैक्टर स्मॉल currently underperforming the benchmark and the objective of the reduced volatility is not being met. Could you provide me analysis with charts to explain why this is happening? While this it's only been a month and more time may be needed to assess performance. I would like insights into potential reason for this trend. I don't think I can explain रौनक 1 महीने में क्यों क्या हो रहा है. आपको जो एक मल्टी फैक्टर का वीडियो आपने पहले देखा है उसको फिर से देखिए और उसमें उसको ब्रेक डाउन देखिए कि हाउ इज इट अ मंथ टू मंथ थिंग और अ ईयर टू ईयर थिंग. So when you compare to benchmark, take 1 year there. Balbir पूछ रहे हैं what is your view on this correction? How much deep this correction will be? Is it difficult to predict market but your will be helpful? Correction मैंने अभी चार्ट से दिखाया, थोड़ा समझाया था कि markets are of course have kind of come out of that momentum, right? There's a break in momentum for sure, but since markets have kind of have shown that corrective, there is a pullback which is pending. Now, whether that pullback sustains, right? If that pullback sustains, we are again back to the same trajectory. If the pullback do not sustain, right? अभी तो यहाँ से एक pullback आएगा.
वो पुल बैक सस्टेन होना चाहिए, अगर सस्टेन हो जाता है तो वापस से भी इन द सेम फेज, अदरवाइज फिर एक नया लेग ऑफ करेक्शन स्टार्ट होगा, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई साइन है फॉर दैट। निखिल पूछ रहे हैं, आई वाज थिंक हाय रॉबिन सर, आई वाज थिंकिंग ऑफ टॉपिंग अप ऑन अ स्मॉल केस विद सम अमाउंट, आई एम currently invested in alpha blend in one of the momentum also. I thought of topping alpha because it's fallen a lot and can get few stock great price. Yes, because you can, Nikhil, for sure. At now, Abhishek, how does the small case handle the same share which is there in two different case? दोनों केस में जब कब ऐड हुआ है उसके हिसाब से हैंडल करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ लॉजिकल बास्केट, राइट, विच यू सी एज दैट बास्केट। अदरवाइज तो क्या होगा, जब आपने खरीदा आपके डीमैट अकाउंट में बाय प्राइस पे है वो। Sir, what can be the reason of value buying small case was high compared to other Golfi small case? I was having view that value buying has lower drawdown compared to momentum and alpha. Yeah, that is right. I mean, Naren, I mean, I can see value being the most hit, right? Yeah, I can see that out of all of us. So if you see right this way, I mean, exactly what we discussed last time when we had, I think, 3 weeks ago meeting, value was topping the charts, right? It was topping the charts because of the same reason. It is now kind of showing you that. So the companies which were 70% companies there, right, where we use that value factor, is kind of growing at a consistent pace. The 30% which kind of giving that push, which when we're stopping the chart on number one small case by 1 month return, 1 month ago, the same kind of momentum play is broken the trend, right? And those same kind of companies are now showing it's the other side of the impact. But from a long-term perspective, I think it will do its job of giving you that slightly lower volatility compared to pure alpha or momentum strategy. Last question है यहाँ पे जोहित का, I have joined Alpha Blend 3 months and इनका इतना लॉस है, so 6% का, why are weekly events being skipped often? There are only two stocks I have profit on, everything else is loss. Yeah, so देखिए दो तीन चीजें यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। वो है कि दो तरीके का हमारे पास चॉइस होता है, राइट। एक है कि आपने जब अल्फा ब्लेंड सब्सक्राइब किया तो आपने ये चीज का हमें कंसेंट दिया कि यू आर कंफर्टेबल फॉर अ वीकली रीबैलेंस, वेदर वी डू इट और नॉट इज समथिंग विद विद अस, राइट, डिपेंड ऑन द स्ट्रेटजी। दूसरा है जब आपने अल्फा ब्लेंड सब्सक्राइब किया और आप सोच के ये आओगे कि हर हफ्ते कुछ नया माल मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो वो भी एक रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट है। हमने हमेशा से बोला इट्स अ वीकली रिव्यूड स्ट्रेटजी। If there are crores and crores of money being invested in a small case, it's very simple for me. It's a 1 minute job for me to download the kind of composition, change it to gold bees, liquid bees, sell everything off and upload it back. And then my alpha blend is intact. But does it help you? It doesn't help you. You will end up booking losses and so strategy is of course a con driven strategy, but markets in India are of course demand, supply, liquidity, and a lot of factors which are at play, right? And of course the sentiments, right? Sentiments and all, which means if the real money is invested in a portfolio, it's our duty, right? It's our duty to also make sure that the investors who are in the small case are not impacted, and therefore somebody is sending hearts, I don't know why, इतने हार्ट्स मत भेजिए, ठीक है। सो बट दैट वाज द रीजन दैट इट मे नॉट बी, या ठीक है। लास्ट से लेते हैं, फिर मैं खत्म करता हूँ इसको। और अच्छा, दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डेटा वेटा बनाया था, मीटिंग कही इतना डेटा बनवा रहे हो, सुबह से दिखा रहे नहीं हो सबको। आई विल शो यू क्विकली, शो यू डेटा कि क्या क्या रहा है कहाँ पे, राइट। फिर हम फिनिश करेंगे, राइट, विल फिनिश इट वेरी सून देन। So where is our, yeah, so the final data, uh, and what is this file? Added mutual fund, have any change also based on change in. This is the file, this is the file. ये वाला फाइल नहीं है, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं, राइट, पूरा। एक बार ये शीट देख लेते हैं क्या चल रहा है। शीट में टीम ने बनाई है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फैच किया डेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है।
आपको ये स्क्रीन दिख रही है बाय एनी चांस? आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन राइट। आई थिंक ये आई थिंक ट्रेलिंग बेसिस पे है। अगर आज 22 है तो ये आई थिंक फ्राइडे टू फ्राइडे पिछला लिया है डेटा, 1 वीक का डेटा इज ट्रेलिंग राइट। 1 मंथ का डेटा ट्रेलिंग होगा राइट, ट्रेलिंग डेटा 18 to 18। ओके, क्लोजिंग ऑन द मार्केट वीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें, okay, so the funds which are doing good, right, in the last 1 month. I mean, top 5 लिए हम होंगे, top 10, top worst 10 लिए होंगे. तो if you see Taiwan Equity Fund, AI ETFs, okay, Emerging Markets Equity Fund, right, Metal Energy Equity, right, these have been doing fairly all right. Metals have been doing all right. Healthcare has been doing flat, and let's see what has not been doing all right. Sorry. So if you see this. So consumption fund has been the worst performer, right? Last 1 month. Venture services, consumption again, Nifty equal weight, Nifty 100 has been equal weight has been doing pretty bad. Balance advantage has no balance here, right? It's same as our balanced basket, right? कि balance में क्यों balance नहीं है? Services fund and and FMCG of course not doing well, oil and gas, right? All of that. ये 1 मंथ हो गया, क्योंकि अभी 1 मंथ का ही पैनिक है राइट। 1 वीक में देखेंगे तो मेटल्स ने अच्छा किया है, मेटल्स कंपनीज राइट, एज यू आल्सो नो हैव बीन डूइंग ऑल राइट। गोल्ड ऑफ कोर्स हैज बीन डूइंग फ्लैट एंड ऑल राइट। निफ्टी बैंक इज नाउ काइंड ऑफ पिकिंग इन दिस वीक, लास्ट 1 वीक ट्रेलिंग देखेंगे तो। और अगर रिवर्स देखेंगे तो again consumption fund even from a weekly perspective has been doing pretty bad and balance fund has been doing okay. So ये डेटा एक है जो टीम ने पुल अप किया था। और आई थिंक स्मॉल केस का भी डेटा देख लेते हैं क्विकली। स्मॉल केस के भी ट्रेडिंग डेटा क्या बोल रहा है? अगेन कंजम्पशन फंड। सो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे स्मॉल केस भी है यहाँ पे। दिस इज अगेन अ ट्रेडिंग डेटा राइट, पिछले महीने का एग्जैक्ट होगा ये। सो अगर हम 1 मंथ देखेंगे तो सारी पोर्टफोलियो नेगेटिव हैं राइट, ऑल पोर्टफोलियोज आर नेगेटिव है, नन ऑफ देम हैज मेक मनी। 3 मंथ्स में प्राइम क्वालिटी इज नेगेटिव, रेस्ट इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मर देन अल्फा ब्लेंड। दिस इज अगेन 1 मंथ, एग्जैक्ट 1 मंथ राइट, पिछला एक महीना है ये। Prime quality, momentum, multi-factor, and growth leader has been all right. This is 1 week trailing. Okay, थोड़ा सा। हाँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इस वीक, मल्टी फैक्टर और सबसे कम बैलेंस बास्केट। ओके, बाकी 3 मंथ 6 मंथ तो खैर फिर वो तो खैर दिखाने के लिए है कि अच्छे नंबर्स हैं। बट हाँ, अदरवाइज 3 मंथ्स में भी आई थिंक वी आर डूइंग ऑल राइट। ठीक है, सो ओवरऑल आई एम श्योर दिस इज अ लिटिल टफ डेटा टू। ऐसा एमएफ शीट कहाँ से मिलता है? एनी वेबसाइट रेफरेंस सर बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है। मिलता है। सो या सो आई मीन द पॉइंट इज कंजम्पशन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए राइट। आई मीन इफ यू लुक एट द कंपनीज नेस्ले या आप जितने भी देखोगे तो एफएमसीजी स्पेस में रिजल्ट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। अच्छी बात यह है कि जो अब क्वार्टर अब शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे थोड़ा कंजम्पशन वगैरह का डिमांड होगा, थोड़ा सा सेक्टर में थोड़ी सा पुश आएगा। तो दैट विल काइंड ऑफ गिव यू दैट। अगर आप अपने बास्केट्स देखो तो देयर दोज बास्केट्स आर पोजिशन समवेयर मोर ऑन कैपिटल गुड्स, फार्मा, एफएमसीजी स्पेस। तो वो चीज़ और मेटल्स, तो मेटल्स तो अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेटल्स वी हैव सीन इट्स वर्किंग वेरी वेल राइट। Metals have been the best performer of the last 1.5 month, and we already have metals right in our all across baskets right, even in the controversial ones like alpha blend or popular ones right. So वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्पेस अच्छा काम नहीं कर रहा है, we have of course exposure to consumption right, and that is where we have taken a hit. But I think it's a matter of time. All of your investments are domestic institution led, right? They are not the company which are promoter run only, and they are very well have institution money. So अभी वो institution money shuffle हो रही है, because if FIs are selling a lot of money out of large caps, then domestic has to kind of support some buying
टू काइंड ऑफ गिव द सपोर्ट टू द ब्रॉडर इंडेक्स, राइट? तो इसलिए उनको अपना थोड़ा पैसा यहाँ से लिक्विडेट करना पड़ेगा टू काइंड ऑफ गिव दैट बफर टू बाय द लार्जर साइड ऑफ द बिजनेस, राइट? लार्जर कैप साइड ऑफ द मार्केट। एंड इसलिए वो पैसा अभी थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन आपको तो और सस्ते में वो कंपनीज मिल रही है, राइट? इट इज ऑल अबाउट इट। सो प्रशांत बोल रहे हैं काफी कुछ पैसा लगाया है, एवरेज कर सकता हूँ? यस, एवरेज कर सकते हो, ठीक है। प्रेम सिंह बोले डायरेक्ट आपका कोई वो है क्या पीएमएस? अभी नहीं है। तो आई थिंक इट वाज अ यूजफुल मीटिंग। आई हैव शोन यू वेयर द म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग द बेस्ट ऑफ द फंड्स, द वर्स्ट ऑफ द फंड्स, वीकली, मंथली, 3 months, राइट? We can do more deep dive in our Zoom meeting, investor only Zoom meeting, and I have shown small cases का performance. I have answered all the questions. I have called back all of you. That is what I wanted to do today and yesterday. अब आप तुम आराम से पैनिक मत करिए। अब का अगले 3 दिन नो एक्टिव कॉन्वर्सेशन नीडेड, राइट? आज शाम का कॉल का नीड नहीं है। अगर कोई को कच्ची को है तो आप कॉल कर सकते हो 4 to 5 के स्लॉट में, आई एम अवेलेबल। अदरवाइज अपने सैटरडे को जूम पे बात करते हैं अच्छे से, ठीक है? थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, राइट? यस 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 यस। चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग एंड द मार्केट टाइम। चलिए, टेक केयर, बाय।